अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी मेजर और बेसिक डेफिनेशंस एलिट्रेशन की, कॉन्सोनेंट्स और रेजोनेंस की। होप्स हो कि आपने वीडियो को लाजमी देख लिया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें और चैनल पर सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द राइवल्स एज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी बाय R.B शेरिडन। रिचर्ड ब्रेंसले शेरिडन का ये एक प्ले है, एक कॉमेडी है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग है। तो इस कॉमेडी को डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी लाजमी फॉलो कर लें, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कॉमेडी को इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, राइटर के बारे में, R.B शेरिडन के बारे में। शेरिडन born on 30 अक्टूबर 1751 टू 7 जुलाई 1866 में इनकी डेथ हुई थी। Was an Irish playwright and a poet and long-term owner of the London Theatre Royal, Drury Lane. He is known for his plays such as The Rivals, The School for the Scandal, A Trip to Scarborough for 32 years. ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने पोइट्स एज अ पोइट और प्ले राइट की वजह से, और बहुत ज़्यादा इनके जो प्लेस थे उनके कुछ नेम्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है। ही वॉज आल्सो अ वीक मेंबर, ये एक वीक मेंबर भी थे ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स फॉर स्टैफर्ड 1780 टू 1906 तक, ठीक है। वेस्टमिनिस्टर एल्सेस्टर, ही वॉज बरीड एट द पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर अबे। एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी Artificial comedy is another name for the comedy of manners, which reached the height of its achievement during the Restoration in England. In the history of the British drama, the comic genius of the British nation has expressed itself in several distinct forms. Its most striking manifestations are romantic comedy, comedy of humors, and the comedy of manners, etc. मेजर कैरेक्टर्स जो थे इस प्ले के वो कौन से थे वो हम आपसे डिस्कस करेंगे आज। सर एंथोनी एब्सोल्यूट थे और कैप्टन जैक एब्सोल्यूट थे। सर एंथोनी एब्सोल्यूट जो थे a wealthy country gentleman who assumes that those around him will naturally obey his wishes. He has a terrible temper but is also quick to forgive. कैप्टन जैक कौन थे? ये सर एंथोनी सन थे, इनके सन थे सर एंथोनी के। He is enamored of the Lydia language and has disguised himself as being insane bravely in order to win her hand. Despite the revelation of the deception, he and Lydia wind up together. फैग था एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जूलिया थी और मिसेस मेलाप्रॉप थी, ठीक है। फैग कौन थे? जैक जेंटलमैन थे। ये ही ऑफन कैरीज मैसेज एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इससे आप कासिद भी कह सकते हैं, ट्रांसफर करते थे इंफॉर्मेशन वगैरह को, मैसेजेस को। जूलिया कौन थी? सर एंथनी ऑफ वार्ड एंड लीजियस कजन थी, इनकी ये कजन थी और शी इज इन लव थी विद फॉल्कलैंड एंड शी इज इजिली द मोस्ट सेंसिबल फॉर द फोर यंग लवर्स इन द स्टोरी। मिसेस मेलाप्रॉप कौन थी? Elderly aunt of the Lydia की आंटी थी, who controls her fortune. She butchers the English language in accordance with her name. Derivals, इसमें है क्या चीजें हैं वो हम थोड़ा सा एक स्लाइड्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। Derival is a comedy of manner, a farce of mistaken identity that has much in common. Goldsmith, She Stoops to Conquer, which came out 2 years earlier, like Goldsmith's comedy. A main character masquerades as someone of the lower class to gain romantic advantage. The young lovers must overcome to his interference of the country bumpkin and an elderly rich aunt, and a second couple provides a subplot and foil to the main romance, perhaps the most memorable character. In The Rival is the elderly aunt, Mrs. Malaprop, who consistently butchers, ठीक है, the English language, taking her name from the solecism in which she is so frequently engaged. After the first performance of The Rivals, it was panned by the critics, and Sheridan hastily revised it in less than those 2 weeks, shortening it over by an hour, making some of the characters more sympathetic and cleaning up the language, after which was the praise
हिस्टोरिस्टिकली। ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा गया है। ये वो चीज़ें हैं जो इसके जो मेन थीम्स आप इससे कह रहे हैं उनमें जो चीज़ें आती हैं, ये सारी स्लाइड्स की फॉर्म में मैंने आपके लिए लिख दी है। शेरिडन इंटेंशन वाज टू poke fun at the sentimental comedy of the time. We find both Falkland and the Julia absurd. इन दोनों को हम absurd पाते हैं और इसकी इंटेंशन जो थी शेरिडन की, ये इसने देखना था, फन था सेंटिमेंटल कॉमेडी पे उस टाइम की, इसलिए प्ले राइट किया गया। द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द फॉकलैंड इज इंडिकेटेड us by the absolute description of him as the most teasing, captious, and incorrigible lover. Falkland's own description of his state of mind about his beloved Julia also makes him appear absurd. He says that every hour is an occasion for him to feel alarmed on Julia's account. If it rains, he feels afraid lest some shower should have chilled her. If the wind is sharp, he feels afraid lest a rude blast should adversely affect her health. The heat of the noon and the dews of the evening may endanger her health. यहाँ पे बात की जा रही है कि वो एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, जूलिया के बारे में उनकी केयर बताई जा रही है, ठीक है। ऑल दिस इज फनी एंड सर्टेनली नॉट टू बी टेकन सीरियसली। एक फन किया गया है इन सबकी जो केयर को लेके और उनकी लाइफ को लेके, इन्होंने आरबी शेरिडन ने कॉमेडी बना दी है, इसे कॉमेडी पे लिखा गया, कॉमेडी लिखी गई है इन सब पर। शेरिडन इज हेयर ridiculing the excessive solitude and the concern which an over sentimental lover like Falkland experiences when separated from his beloved. Sheridan seems to be pleading for mental equilibrium even in the case of an ardent lover. The manner in which the other characters have been portrayed is also evidence of the anti-sentimental character of the play. Captain Absolute is a practical man, and though they assume the name and status of the ensign bravely, he would not like to forfeit the rich dowry which Lydia brings him. Mrs. Malaprop is a conventional, practical woman whose attitude is marriage to business-like. Sir Anthony too is a practical, worldly man. Bob Eckers is a country boor with no romantic or sentimental pretensions, but towards the end of the play, he shows that he's more practical and than anybody else. He's saying, यहाँ पे सर एंटोनी जो थे ये भी एक प्रैक्टिकल से बंदे थे, इंसान थे। इन्होंने लास्ट वर्ड जो कहे थे वो ये थे, If I can't get a wife without fighting for her by any warrior, I will leave a bachelor. समिंग अप कर देते हैं सारी चीज़ों का, मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं बेसिकली लिखा किस चीज़ पे है। शेरिडन models were the restoration masters who is in their comedies were guided by the witty, humorous and satirical portraitures of the society. Sheridan also writes in the same veins, is equally satirical and characterization witty and brilliant in his dialogues. बताया गया है कि शेरिडन के जो प्लेस है वो बेसिकली ज़्यादातर बेस इन्हीं चीज़ों पर करते हैं, कॉमेडी पे, उन पे फन किया जाता है चीज़ों पे, तो इन सारी चीज़ों पे लिखते हैं। तो सो इट वाज ऑल अबाउट द प्ले एंड द थीम्स ऑफ द डिराइवल्स, और आरबी शेरिडन की थोड़ी सी बायोग्राफी डिस्कस की गई है आपसे इसमें भी। अगर इसमें भी आपको कुछ नहीं समझ लगा है तो मुझे बताएं, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगी। और कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।